feeling of रोंगटे खड़े हो गए यार. What a lovely trailer. Absolutely amazing. क्या करें अब? बुला ले. हाँ, स्क्रीन पर तो देख लिया, बुला ले. No. नहीं, नहीं. But without further ado, let's welcome the absolutely dashing and everybody's favorite Shahid Kapoor, the gorgeous and super talented Mrunal Thakur, the visionary behind the film, director Mr. Gautam Tinnanuri, and producer Mr. Aman Gill. Hello, hello Gautam sir. Hi Mrunal. Great. Are we all settled? Everyone comfortable? Perfect, यार. कितने beautiful लग रहे हैं सब. Shahid, Mrunal, Gautam sir, Aman. My first question, Shahid, to you. Obviously, और अगर मीडिया को देखकर लग नहीं रहा, everyone's very very excited for the film. And आपकी last film, कबीर सिंह के बाद, this is going to be your next film, you know, which means there's a lot of excitement, everyone wants to see you on screen, but at the same time, I feel like there is also a lot of expectation that comes with that. How are you coping with this, or what are the thoughts that you have about this? First of all, good afternoon, everybody. It's really nice to see you guys in here, not out in the heat. I know it was very hot outside. So, first of all, to all the paps, sorry to keep you guys in the heat. Hopefully, you're all cooled down now. वो किधर गया? चुप रहे तू देख. Hi, मेरे कबीर सिंह. जोरदार तालियां. नहीं, कबीर की कभी गलती नहीं हो सकती. गलती दूसरे लोगों की होती है. But love you guys and sorry for the fact that it's so hot. Nobody can do anything about it. We're all dealing with it. Thank you to all the media in the back and everybody who's seated here for coming here today to see the second trailer of Jersey. We never really thought we'll have to make a second one. It's difficult enough making a first one. But I guess sometimes when a film is special, it has enough material to be able to make a second trailer. So first of all, I'm very proud of the entire team that we were able to, and I must say that the second trailer was wholly and solely handled by Gautam sir. We all turned towards him and said that किसी से कुछ नहीं हो रहा है. The marketing team also was very confused about how to make a second trailer, but I mean, he has lived with this film for I think 5 years now, 4 years, 4 or 5 years. So I think he understands the heart of Jersey and the heart of Arjun Talwar and the heart of the relationship between Arjun Vidya and Kittu. And he came up with a trailer that I felt was very powerful, very impactful. I think the first trailer was really the heart of the film. You could see the emotionality of the film. You could understand the mood of the film. And this trailer really is the call to action. 14th April, here we come. We're ready to go. We've dropped our second trailer. Proud to be here. And I'm coping all right, brother. I'm coping all right. Sometimes I need a little bit of IV and stuff like that. But other than that, I'm good. I mean, just before I came on stage, they were like, they just pulled the drip out. I was like, all right, let's go. I'm on. Put a colorful jacket on, look sharp, feel good, have a smile on your face. Always works. Sounds like a very shy thing to say. I mean, tell me one thing. सुबह उठ के सबसे पहला thought क्या था आज? बहुत सारे थॉट्स होते हैं एक्चुअली. सुबह तो जब मैं उठता हूँ तो यूजुअली माई सन इज सिटिंग ऑन माई चेस्ट. That's how I wake up in the morning. So I wake up with a I was like Papa. That's usually how I wake up. So yeah, today was no different. The mornings are dedicated to the children. Absolutely. And the afternoons are dedicated to films.
Well, thank you, Shahid. Mrunal, आपके पास आ जाते हैं. Mrunal, should I call you Vidya? Yeah, perfect. So, आपके पास you play this very strong female character in this film, which we've seen as a trend over a lot of film choices that you've made, be it Tufan, Super 30, Dhamaka. What is that one character trait that you look for, or what are some things that you look for in the roles that you choose? Well, thank you for asking me that question. And good afternoon, everybody. I'm so happy to see you all again. Thank you. And coming back to your question, well, I think the best part about being an actress is not just being an actress and playing that character, but to be able to play a journalist, to be able to play a dancer, to be able to play a receptionist in this film, working for a hotel. So she has an identity of her own. She's independent and she's able to she's making sure that the family is financially stable. So I feel like there is a evolution as far as writing the characters in terms of Bollywood heroines are concerned. And I would really like to thank Gautam sir for giving me this opportunity because it's such a meaty role and one of the most difficult role that I have played. First of all, to be in front of Shahid, you end up like forgetting your lines. And then you have a scene where you have to slap him. Then you have a scene where you're romancing him. So, it was overwhelming. And yeah, I must say that all the wives are not similar. इस रूम में I'm sure आप मुझसे you will agree with me कि हर एक के वाइफ में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है. So I'm happy that I am contributing and it's such a great role. And next time I'm sure कि मुझे ये questions नहीं मिलेंगे कि मृणाल you always play supportive roles. इस फिल्म में क्या हुआ? No, at all. So this is a very special film for me because it was very, like I mentioned, it was extremely difficult. But having said that, there is one person in your life who will always push you to become better. And like in this film, you see the Kittu is the driving force for Arjun, to get what he really wants, which you would see in the film. I would really like to thank my father because he's someone who really inspired me to be not just a better human, but a better actress. That was absolutely lovely. Thank you so much, Mrinal. Gautam sir, man of the hour. Yeah, I was feeling bad about the guys who are taking so much effort to put the hoarding. But yeah, we are back again, and hopefully I'll see a hoarding when I'm going back to Hyderabad now. Yeah, very happy, very excited, and we want this film to come in theaters and everyone enjoy in theaters. Hopefully, you'll all love the film. Thank you. Thank you so much, Gautam sir. We loved the trailer. I'm sure you would agree with me. Do we love the trailer? Can we go to Aman sir? Aman sir, can we have a small question for you as well? Same question. आपकी ही फिल्म है और इतना टाइम लग गया. It took some time, but it is here finally, 10 days away. How are you feeling about this whole situation? Just like Gautam said, likewise we same feeling थी December से लेके अभी तक just waiting and waiting and waiting and just excited to bring the film to you. आप लोग देख सकते हो ट्रेलर से. It's a big scale film. It's not just it's an intimate story but big heart, but cricket's big, visuals are big, so we wanted to bring it to the big screen. And that was the fight always, and we didn't want to go anywhere else. So now excited. How lovely. Thank you so much. We will now open up to all our lovely media personals one by one. We'll take questions. Hi Shahid, Ravi from ABP News. Hi Ravi, how are you? Hi, I'm fine. शाहिद लगभग 2 दशक 2 डेकेड हो गए हैं आपके करियर को और मुझे लगा पिक्चर के लिए 2 दशक हो गए. मैं बोला नहीं यार, 2 महीने हुए. मैं जानना चाहूँगा कि बॉक्स ऑफिस का प्रेशर कितना होता है एक फिल्म परफॉर्म करे बॉक्स ऑफिस पर. क्या अभी भी आप उस चीज़ को लेके काफ़ी नर्वस होते हैं और फिल्म रिलीज से पहले क्या कुछ आपके मन में चल रहा होता है या ओवर द इयर्स आप सीख गए हैं कि यार जो भी होगा देखा जाएगा? मतलब कुछ बताएंगे इसके बारे में? जो भी होगा देखा जाएगा, पर तो लाइफ चलती है. तो आई थिंक दैट्स ऑलवेज अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव. इट्स यू ऑलवेज हैव टू गेट अप रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस. दैट्स हाउ आई लिव्ड माय लाइफ. जैसे आपने कहा, मुझे ऑलमोस्ट 2 दशक हो गए हैं, 18 साल हो गए हैं और
नहीं 19 साल होने वाले हैं इस साल और अगले साल 20 हो जाएंगे. सो आई बीन हियर फॉर अ व्हाइल. आई डोंट फील दैट ओल्ड बट आई बीन हियर फॉर अ व्हाइल. क्या है दैट एक्चुअली जो आपने सवाल पूछा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज आपकी फिल्म का जो पोटेंशियल होता है वो उसका जॉनर और उसकी रीच कितनी हो सकती है उस पर डिपेंड करता है और अलग अलग सब्जेक्ट्स जो होते हैं एज यू स्पेंड मोर टाइम एज एन एक्टर एटलीस्ट मुझे थोड़ा वक्त लगा है समझने में. क्योंकि मैं थोड़ा एक्टिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं स्टारडम वाले बैकग्राउंड से नहीं आता. मेरे फादर जो थे वो एक्टर थे तो वो हमेशा बहुत प्योर वे में मुझसे डिस्कस करते थे. मेरी मॉम भी हमेशा से कलाकार थी तो वो हमेशा कलाकारी की बात करते थे. वो बिज़नेस की बात इतना शायद जानते ही नहीं थे मुझसे करने के लिए. तो वो शायद मैंने खुद समझा है पिछले ये जो बैठे हैं ना मेरे साथ इनको मैं 18 साल से जानता हूँ. 18 साल 12 13 15 साल जब भी मैं से पहले आए थे ये. तो हाँ आई थिंक 15 साल हो गए. और जब भी मुझे कुछ भी नंबर्स का पता करना होता तो मैं इनको फ़ोन करता था. और अब फाइनली ये अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ अमन. ताली बजा दो यार प्रोड्यूसर ने. Let's, yeah. आपका भी पहला दिन आएगा लोग ताली बजाएंगे अच्छा लगेगा. सो हमेशा नंबर्स ये मुझे बताते थे और धीरे धीरे समझाते भी थे कि अलग अलग जॉनर्स होते हैं उनके लिए अलग अलग तरह की ऑडियंस होती है. मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि मेरी फिल्म की जो ऑडियंस है मैं उसको मैक्सिमाइज़ कर पाया या नहीं. जितने लोग इस फिल्म या इस सब्जेक्ट को देख सकते थे समझ सकते थे या इंटरेस्टेड होते वो इस सब्जेक्ट को देखते हैं या नहीं. और मेरी फ़िल्म की क्वालिटी कितनी अच्छी है बिकॉज जब फिल्म की क्वालिटी बेहतरीन होती है तो वो अपनी ऑडियंस से ज़्यादा बाहर तक जा सकती है. तो एक आपकी कोर ऑडियंस होती है और एक वाइडर ऑडियंस होती है जो कोई भी अच्छी फिल्म देखना पसंद करती है. और तीसरी चीज़ है कि आपकी अपनी एक ऑडियंस होती है जो आपको पसंद करती है एज एन एक्टर सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे यही लगता है अब कि मेरी जो भी फिल्म आए वो मैं जितने ज़्यादा लोग उसको समझ सकें या रिलेट कर सकें मैं चाहूँगा. क्योंकि कबीर सिंह के बाद एक वाइडर ऑडियंस बेस है और बहुत प्यार मिला मुझे. तो एक्चुअली मैंने इस फिल्म को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि जितना प्यार मुझे मिला जितना इमोशनल मुझे फील हुआ अगर मैं वो वापस ऑडियंस को इस कहानी के थ्रू इस कैरेक्टर के थ्रू दे पाऊँ कि जब वो फिल्म देखकर ऑडियंस बाहर जाए तो उन्हें लगे कि उनको एक एक होलसम फिल्म मिली और कहीं दिल को छुए वो फिल्म. तो मैंने वो सोच कर ये फिल्म की है बिकॉज एक्चुअली जब आप दिल को छू जाते हैं तो नंबर्स ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होते वो आ जाते हैं. लेकिन दिल को छूना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम फिल्में शायद इसी वजह से बनाते थे और अब भी बनानी चाहिए. शायद आपने पापा का जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले. वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स माने जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के. एक चीज़ अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने बेस्ट क्वालिटी क्या इम्बाइब की है अपने पापा से बतौर एक्टर या बतौर सन, क्या बताना चाहेंगे? वो आपको डायरेक्ट भी कर चुके हैं पहले और फिर से काम करने का मौका मिला है तो क्या कहना चाहेंगे एक बेस्ट क्वालिटी जो आपने इम्बाइब की उनसे? उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैंने उनसे जो इम्बाइब किया है वो ये है कि मैंने उनका जो वर्क एथिक है और जो अपने काम की तरफ एक इनोसेंस होता है कि आप ऐसे हर चीज़ को अप्रोच करते हैं जैसे शायद आपकी पहली फिल्म है. वो मैंने अपने डैड में देखा है. वो कभी ऐसे नहीं बिहेव करते कि अब तो मैं प्रोफेसर या प्रिंसिपल हो गया हूँ. वो हमेशा स्टूडेंट की तरह ही हर फिल्म को हर कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं. और उनके जैसे दिग्गज कलाकार अगर इतना हम्बल रह सकते हैं तो हमारी क्या औकात. मैंने यही सिखाया. Hello, Shahid sir, in front of you. व्हाट्स अप ब्रदर. Yeah. So the trailer 2 is also looking fantastic. So congratulations to the थैंक्स team. यार. पहले किसी इंसान ने रिस्पॉन्स तो दिया. हम लोग तो ये सोचे जवाब तो दे देंगे पर लगा कैसा. Yeah. So I'm no. so happy you liked it. Thank you. Being a cricket fan, it's look fantastic and अभी तो यंग हूँ फिर भी रिलेटेबल लग रहा है. तो या सो माय अभी तो यंग हूँ मतलब शादी नहीं हुई तेरी. नहीं बिल्कुल शादी के बाद सडनली ओल्ड हो जाएगा तू देखना तो. ओके. सो द क्वेश्चन इज क्रिकेट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड जैसे कि हमने देखा कि मूवी एक दो बार पोस्टपोन हुई दिसंबर में फिर अभी 14th. खैर आज के टाइमिंग क्लैशेस के बारे में तो छोड़ ही देते. बट मेरा क्वेश्चन यही था कि मूवी में दिखाया गया है जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं क्या आपको लगता है कि करियर में भी एक शिफ्ट लाने के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है? मुझे ना मेरे काफ़ी एक बहुत करीबी बहुत सीनियर लाइक फैमिली मेम्बर थे. उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिल जाती है दे आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रीज़. और अगर आप देखें जब भी ज़ोर की हवा चलती है
तो बड़े पेड़ गिरते हैं, छोटे पेड़ नहीं गिरते, वो ऐसे मूव करके एडजस्ट हो जाते हैं। और बड़े पेड़ जो होते हैं, जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो गिर जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू बी मोबाइल, यू नो। एंड उन्होंने यही कहा था कि जब आपको जल्दी सक्सेस मिलती है तो आपको समझ ही नहीं आता कि ज़िंदगी में कभी कभी टाइम के साथ थोड़ा एडजस्ट करना ज़रूरी है। और जब थोड़ा लेट सक्सेस मिलती है तो क्योंकि आप शुरुआत से ज़िंदगी को फ्लेक्सिबली जीना सीख लेते हो कि भाई कभी सक्सेस आएगी, कभी फेलियर आएगी, तो लाइफ में आप चलते रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मुझे उससे ये सीख मिली थी कि कभी कभी थोड़ा लेट अगर सक्सेस आए तो शायद वो ज़िंदगी के लिए बेहतर है, बिकॉज इंसान भी तो अच्छा बनना है और कुछ सीखना भी तो है। सिर्फ सक्सेस लेके क्या करेंगे, हलवा बनाएंगे उसका? ज़िंदगी भी तो जीनी है। जी शाहिद, मेरा सवाल आपसे है यहाँ। बाप कैसी हैं आप? जी, बस इतनी ठीक खूबसूरत लग रही हैं आज आप। थैंक यू, ये जो थैंक यू बिंदी बेटा। लगाई है ना आपने आपने गेम कर दिया है, हाँ? थैंक यू, तो थैंक साइड में तू क्यों शर्मा रहा है? तूने थोड़ी बिंदी लगाई है। जी जी, तो मेरा मेरा सवाल आपसे ये है, अभी अभी आपने कहा कि आपके माता पिता दोनों बहुत, मेरा दो सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। आपने कहा कि मेरे माता पिता दोनों बहुत टैलेंटेड एक्टर्स थे, तो क्या कहीं कोई हैं वो हैं। सॉरी आप सॉरी थे बोलेंगे मुझे घरे चपेट पड़ेगी। sorry, sorry, तू sorry. होगा, थे, हम तो हैं। सॉरी सॉरी माय पेरेंट्स आर स्टिल वेरी मच इन द जोन। दोनों बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं। Thank you जी। तो क्या कहीं जो आपने कहा कि उससे कम मैं होड़ नहीं दूंगा, जो आपका जो डायलॉग है, और आप क्योंकि आप खुद पिता बन चुके हैं, तो क्या आपके बच्चों, जैसे किट्टू ने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी एक जर्सी को लेकर, उसी तरह क्या आपके बच्चों ने कुछ ऐसा किया जिसने आपको कुछ आप में बदलाव लाया? सबसे पहले तो आपका बहुत अच्छा सवाल है। और मुझे लगता है कि अगर मैं एक बाप नहीं होता तो मैं शायद इस फिल्म को नहीं निभा पाता जिस तरीके से मुझे निभाना था। शायद ये फिल्म भी मेरे दिल को इसलिए छू गई क्योंकि अब मैं एक पेरेंट हूँ, तो मुझे वो रिश्ता समझ में आता है। क्योंकि जब आप बेटे होते हो ना, तो आपको कभी समझ में नहीं आता कि बाप को क्या फील होता है। चाहे आप कितना भी कोशिश करें, वो आपको हमेशा ऐसा लगता है, वाई डजंट ही अंडरस्टैंड मी, वाई डज ही डू दिस, वाई डज लेट मी बी मी, आई वांट टू बी मी, ये सब एक तरफ लगता है। लेकिन जब आप बाप बन जाते हो ना, तो आपको सब समझ में आने लगता है कि आपके फादर या आपके मदर आपको जो भी कहते थे वो क्यों कहते थे। बिकॉज एक पेरेंट का जो अपने बच्चे की तरफ जो एक इमोशन है, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने 30s में पहुंच जाते हो तो आपकी ज़िंदगी एक खुली किताब होती है जो आप कहीं बीच में हो। अगर 100 पेज की पन्ने की किताब है तो आप कहीं 40-50 पेजेस पे हो। आपका हर रिश्ता जो है वो 40-50 पेजेस का बैगेज लेके चल रहा है। लेकिन जब बच्चे आते हैं तो वो एक नया रिश्ता होता है, उसको आप 1 से फिर से स्टार्ट कर सकते हो। और वो बागडोर आपके हाथ में होती है कि आप उसको कैसे निभाना चाहते हो। तो आई थिंक उसके अंदर एक इनोसेंस होती है जो बचपन में आपको महसूस होता था अपने रिश्तों के बारे में, वो आप फिर से एक्सपीरियंस कर सकते हो एज अ पेरेंट। सो वो चीज़ मैंने आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट समझी कि यार ये तो बच्चा इनोसेंट है, मैं जैसा रहूँगा ये मुझसे वो सीखेगा, और हमारी रिलेशनशिप उसका दारोमदार मेरे ऊपर है। जब मैं बच्चा था तो मेरे पेरेंट्स के ऊपर था उसका दारोमदार। सो वो बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने सीखी है। और दूसरा पार्ट क्या था आपके सवाल का? वो था कि क्या पेरेंट्स जो कि बहुत अच्छे एक्टर और सुपरस्टार तो आप बनते ही, क्योंकि आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत गुड लुकिंग अब है। मैंने आपको खूबसूरत बोला तो आप भी कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं आप उसमें। थैंक नहीं, यू। मैं ऑनेस्टली कह मुझे रही जो हूँ। चाहिए था मुझे मिल गया। जी जी, लेकिन एक्टर होने का कितना आपके ऊपर वो था, प्रेशर था कि? प्रेशर नहीं था एक्चुअली, मुझे लगा ही नहीं था मैं एक्टर बन पाऊंगा। क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं थे कि मैं डैड का बेटा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेपरेटेड थे और मैं बॉम्बे में नहीं रहता था। मैं बॉम्बे में काफ़ी लेट आया, और मॉम सिंगल पेरेंट थी। मैं और ईशान, मैं थोड़ा बड़ा था, ईशान तो बहुत ही छोटा था। तो मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं, और तो मुझे पता भी नहीं था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक्चुअली फर्स्ट फिल्म जब मिल गई मुझे और बन गई, तो लोगों ने जाके थोड़ा वो टाइम पे आई थिंक गूगल होता था, नहीं होता था वो टाइम पे, आई डोंट नो इफ इट वाज देयर, बट नोबडी नहीं था ना 2003 रीडिफ याहू याहू, हाँ। तो वही तो सर्च इंजन्स आई थिंक इतने नहीं थे, तो लोगों ने जाके पता किया कि ये कौन है, तो पता चला अच्छा ये है। तो वो एक्चुअली मेरे डेब्यू के बाद हुआ। तो मुझे तो लगता ही नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा। लाइक मृणाल तो फिर भी टीवी की बहुत बड़ी स्टार है,
यू नो मैं सीरियसली कह रहा हूँ ऑनेस्टली यू नो शी वॉज वेरी वेरी पॉपुलर ऑन टीवी बट मेरे लिए तो ऐसे ही था ये मेरी पहली पिक्चर नहीं चली तो मेरा तो मतलब एकदम आउट हो जाऊंगा मैं सो आई आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग दैट आई एम एन एक्टर और मैं जानता हूँ लोग शायद ना माने इस बात को क्योंकि मेरे पेरेंट्स टेक्निकली एक्टर्स हैं लेकिन वो ज़्यादा लोगों को नहीं जानते थे Hi everyone, Preeti here from first. Hi. वेर आर यू Hi. प्रीति Hi, Preeti. तुझे तो होस्टिंग वोस्टिंग करनी चाहिए यार Thank you, thank you. यार तू चले जा यार वी डोंट नीड यू है ना प्रीति है ना यहाँ पे और वैसे उसका नाम भी प्रीति है तू चले जा Okay, so Preeti here from first India Filmy. मेरा सवाल आप सबसे है कि इस मूवी से क्या कुछ इंस्पिरेशन मिली है या फिर क्या कुछ मोटिवेशन मिली है आप सबको? फर्स्ट साइड. नहीं फर्स्ट डायरेक्टर बिकॉज यू नो Okay, उन्होंने फिल्म बनाई है Yeah. है ना Yeah, I told this earlier also. I mean, the basic idea writing this story came from the thought that we all give value to a person on the amount of success he had. So we always quantify the success and see this person is greater and this person is much greater. But we might be forgetting the similar people around us having the same skills but not as successful as they could be. So the idea of the story came from that point where we need to tell the story of all these people irrespective of their success. So these are the people all around us. So that's how it started, and then we thought it would be nice to have a sports background to the film because the other fields might be a little different. In business, probably age is not a factor, physical agility is not a factor, but for sports, it's definitely a factor. So we thought, I mean, writing-wise, that would be a good barrier for the character to grow because it's something which you can't do anything. So that's how it started, yeah. सो यू नो लाइक मैंने पहले भी कहा हमारे ज़िंदगी में वो एक इंसान हमेशा होता है जो हमें पुश करता है कई बार हमें हमारे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता जो हमारे करियर चॉइसेस है आई एम श्योर इस रूम में काफ़ी सारे लोग बैठे होंगे उनको अपने फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला होगा इट डजेंट मीन दैट यू डोंट लव योर फैमिली यू नो वी ऑल आर परमिशन लाइक आई एम अ परमिशन चाइल्ड जब तक मुझे परमिशन नहीं मिलती है मैं 100% नहीं कर पाऊँगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस फिल्म हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड मी मैं आपको बताऊंगी जो लास्ट फिल्म मुझे जिसने मुझे मेरा करियर चेंज हो गया मैं बीडीएस करने वाली थी डेंटिस्ट बनने वाली थी मैं शायद आपको क्लिनिक में मिलती लेकिन आज मैं यहाँ पर आपके सामने बैठी हूँ वो है 3 इडियट्स क्योंकि उस फिल्म में मुझे ये सिखाया कि आप अपने दिल की सुनो वैसे ही अगर जब मैंने फर्स्ट टाइम जब फिल्म देखी और मैंने हमारे डायरेक्टर गौतम सर से बात की तो मैंने उनको बस यही कहा कि मुझे किसी भी मतलब आई जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म क्योंकि इस फिल्म ने दिस समथिंग विद इन मी मूव्ड क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ों की शुरुआत तो हम कर देते हैं पर ख़त्म नहीं करते क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता क्योंकि कोई कंडीशंस होती है सपोर्ट नहीं मिलता तो इस फिल्म में ज़रूर आप देखेंगे कि किस तरह से अर्जुन तलवार वापस वो अपनी जर्नी शुरू करता है उसी तरह से मैंने भी अपनी जर्नी वापस शुरू की थी 2-3 साल टीवी के छोड़ने के बाद सो फॉर मी कहीं ना कहीं मैं अर्जुन को अपने आप को वहाँ पर देखती हूँ मैं बुलबुल को वहाँ देखती हूँ मैं सोनिया को वहाँ देखती हूँ कि देयर इज़ दैट वन थिंग which will always be around you, a person, your friend, your teacher, your child, your grandma, your friend, whoever that be. मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से जब आप ये फिल्म देखेंगे अपनी पूरी फैमिली के साथ तो प्लीज़ एक फ़ोन उस इंसान को ज़रूर करना और कहना कि थैंक यू टुडे क्योंकि जब मैंने फिल्म देखी दिसंबर में तो मैंने अपने डैड को बोला कि डैड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लाइफ फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया मेरे एक्ट्रेस बनने के खिलाफ थी लेकिन आज मैं उन सारी फिल्मों का हिस्सा बन रही हूँ बाकायदा जर्सी एक ऐसी फिल्म जो आपके अंदर का जो पैशन था वो जिस भी कारण बुझ गया हो वो इट विल इग्नाइट द फायर विद इन यू दैट्स व्हाट दिस फिल्म हैज़ डन टू मी
मुझे डर लग रहा है इन्होंने जो जवाब दिया उसके बाद मेरा सब फुस फुस हो जाएगा वीक कैसे। नहीं एक्चुअली मैंने बहुत पर्सनली कनेक्ट किया था, मैंने पहले भी बात की है इसके बारे में इस सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि हमारा काम कुछ ऐसा है और शायद बहुत सारे काम ऐसे हैं जहाँ जब आप अपने मिड थर्टीज़ में आते हैं तो बड़े सारे नए लोग आते हैं, लोग उनके बारे में बड़े एक्साइटेड होते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं होते अपने करियर में तो आपको ऐसा लगता है कि यार क्या लोग भी मुझे उतनी इंपॉर्टेंस देंगे, इतने सारे नए लोग आ रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, एक तरफ तो ये बात होती है, सो यू वंडर कि जो आपने अपने लिए सोचा था या जो आपको लगता है आप करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली से अपने बच्चों से इतना दूर रहते हैं, वो होगा या नहीं होगा, और दो तरह के लोग होते हैं मुझे ऐसा लगता है। 20s में तो सबके अंदर आग होती है यहाँ पे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, और फिर लाइफ होती है, और मुझे लगता है 95-96% हिंदुस्तानी मर्द और कई औरतें शायद वो नहीं कर पाती जो वो करना चाहते थे, उनके जो अपने ख्वाब थे अपने लिए, उनको फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, या अपने जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके लिए, शायद उनको अपने आप को और अपनी चाहतों को पीछे करना पड़ता है और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है, और फिर एक वक्त आता है जब या तो वो आग उनके अंदर कम हो जाती है और वो लाइफ में शायद ठीक एडजस्ट कर लेते हैं जो भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, और आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो आग कभी जाती नहीं है, वो जलती रहती है, जलती रहती है। और ये फिल्म उस कैरेक्टर के बारे में है जो रोज़ अपनी ज़िंदगी वैसे ही वैसे ही वैसे ही नहीं जीना चाहता, और वो एक दिन कहता है कि यार आई वॉन्ट टू फील अलाइव, आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट लिव, आई वॉन्ट टू फील अलाइव, और वो उस चीज़ को चेज़ करता है जो उसे लगता है कि वो ऐसा कर सकता है शायद जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, जिससे उसे लगता है कि क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर यही है कि उसका बेटा भी उसे वैसे ही देखेगा जैसे शायद लोग उसे देखते हैं, और वो बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए, तो वो उसको चेज़ करता है बिकॉज वो कहता है यार आई वॉन्ट टू फील अलाइव, फिर जो भी हो जैसा भी हो वो देखा जाएगा। तो वो महरम के अंदर वो लाइंस भी हैं, क्या लाइंस है वो, ना है जो देखी जाए अब करम ही फरमाए, होना है जो देखी जाए अब करम ही फरमाए, कि अब मेरे कर्म जो हैं वही बात करेंगे दुनिया से, अब जो होगा वो देखेंगे। सो वो एटीट्यूड जो है मैंने जब ओरिजिनल फिल्म देखी इट ब्रोक माई हार्ट, मतलब इट टोर थ्रू माई हार्ट एंड इट वेंट एंड जस्ट आई डोंट नो कनेक्टेड विद समथिंग सो डीप कि मैं इंस्पायर हो गया यार, बहुत मोटिवेट हो गया मैं, तो मुझे लगा कि ये कहानी तो मैं हिंदी ऑडियंस के पास लेके जाना चाहता हूँ। और किसी ने सवाल पूछा था कि डिले हो गई, टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, आपने शायद यहाँ किसी ने सवाल पूछा था, तो मुझे एक्चुअली वियर्डली ये लगता है कि आफ्टर कोविड एंड आफ्टर एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन द लास्ट 2 years, आई फील ये फिल्म जो कह रही है ये हम सब के लिए बहुत ही एक बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस होगा लेकिन आई थिंक बहुत मोटिवेटिंग भी होगा, तो दैट्स व्हाट आई फील। Hi, Shahid. Justin here from PTI towards your left. Here, here. What's up, Justin? Hi. Hi, hi. Shahid, so much of Jersey is about a man who bounces back after being written off. As an actor, was there ever a phase, Shahid, where you felt that a section had written you off? तू बता यार, तूने राइट ऑफ किया होगा, तू बता दे। No, I you didn't. guys do such deep analytical studies of our careers that we also never thought those things that you guys write, तो तुम बताओ। No, but as an actor, I तो never thought कि मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, मैं बहुत बेशरम और बहुत थिक स्किन था, आई वाज लाइक मैं कर सकता, नहीं तो मैं नहीं होता ना। अगर मैं ये कहता हूँ हमेशा, एंड आई रियली मीन दिस, इन द 20s व्हेन वी आर इन आवर 20s वी डोंट हैव पर्सपेक्टिव ऑफ रियलिटी, we look at everything in a very idealistic manner and we have a lot of adrenaline and a lot of passion and a lot of drive inside us, so we keep pushing hard for things that a lot of times are very like they probably won't happen, but you keep pushing, and I think that's how my life was. I mean, I've done everything thinking मैं कर लूँगा when everybody else looks at you and says ये कैसे होगा, so I have always lived my life like that कि अगर कोई ना बोलता है तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो ये मुझे जब ज़्यादा लोग बोलते थे ना ये वो तो मुझे लगता था अच्छा रुको रुको, टाइम आएगा टाइम आएगा। ब्रेव हार्ट के अंदर एक सीन है पता है, जब वो स्कॉटिश आर्मी वेट कर रही है और सामने से इंग्लैंड की आर्मी आ रही है और वहाँ पे वो व्हाट्स मेल गिब्सन वेट कर रहा है एंड ही इज जस्ट सेइंग होल्ड होल्ड होल्ड, सो इन लाइफ यू हैव टू गो थ्रू दोज मोमेंट्स, यू हैव टू होल्ड, let the world put you down, use it, it's fuel, and I really feel sometimes ease
and success is more harmful for you than failure, because failure puts a lot of fuel in your system to work really hard, I think. Hi, hello everybody. Oh my God, Kamal Nahara in the house. What's up? This question is actually, it can be answered by anybody or by everybody. The trailer suggests, and of course we know, Jersey is the story of an underdog. And through the years, over the years, one has seen that an underdog's story generally strikes a chord with the audience and clicks. The trailer also suggests that it looks very nice, it just might click in a big way. Is it real life imitating real life that y'all are the underdog for 14th April? A very big film, KGF Chapter 2 is coming. Very big in terms of scale. Y'all might be bigger than that also. One doesn't know. One will know on 14th April. So, Gautam, beginning with you, how difficult was it to accept that you will be known as the underdog till the day of release? How difficult was it to plan your release on 14th April? Because the moment Lal Singh Chadda shifted, Right. I got a call from him that, we are coming on 14th. So was it a difficult decision or it wasn't? So the way I see it, I mean, the lot of well-wishers and a lot of friends who call me and ask me, I mean, KGF is coming, it's such a big film. Probably you shouldn't be coming on the same day. The way I see it, sir, I think good film always finds its way to the audience, and we are very confident about our product. And I don't see it as. Yeah, thank you so much, sir. I don't see it as KGF versus Jersey. I see it as KGF and Jersey, because I think both the films have enough space. And I mean, the pandemic has done a lot of bad things, but if I can say one good thing, I mean, it brought us the entire fraternity and industry together. Every Friday, we want every film to work, and the same way I want KGF to work, because, yeah, because we are so happy. Gangubai worked, Triple R worked, Kashmir Files worked, and we want KGF to work, and we want Jersey to work. So yeah, I think we have enough space for both the films to work, and the audience get a better option. So we're happy for that. Yeah. Thank you. Well, I'm so happy to meet you, first of all. Thank you, so am I. Sir, honestly, this week is so like the release week is so crucial because Jersey is coming, KGF is coming, and I think we all are spoiled for choices. You know, it's a human drama. You'll see this lovely journey of Arjun Talwar. At the same time, you'll see KGF Chapter 2, which we all have been excited and waiting. So I think I'm the kind of person who watched Spider-Man and 83 on the same day, like back to back shows. So guys, I mean, I'm very excited for the film to come out, first of all, because it's my best, like, according to me, I feel like I'm really proud of this film. And second of all, it's coming out in theaters. Bollywood is coming. You know, we need to stand together. We need to celebrate each and every film. This story deserves to reach out to the wider audience, and I'm just happy for it to be coming out in theaters. So, yeah. Great. Well, see, I'll go a little back before I come to answer your question, because my point of view towards these things is a little different. After Kabir Singh, everybody said, अब तुम्हें ना 150 करोड़ की फिल्म करनी चाहिए क्योंकि पैसा लोग लगा देंगे तुम्हारे ऊपर. And I was like, लेकिन वो लगा तो देंगे, लेकिन पिक्चर क्या होगी? So I think एक स्केल्ड फिल्म बनाना और एक अच्छी फिल्म बनाना हमेशा सेम चीज़ नहीं होते. मुझे ये लगता है अच्छी फिल्में चलती हैं. तो KGF 2 अच्छी फिल्म होगी, ज़रूर चलेगी. जर्सी अच्छी फिल्म होगी, ज़रूर चलेगी. फिल्म अच्छी होनी चाहिए. और दूसरा, यार, मैंने जो सिनेमा देखा है, जो मैं बड़ा हुआ हूँ, बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल था ना बड़ी फिल्म करना, अभी भी पॉसिबल है, क्यों नहीं कर रहा मैं, ये क्यों कर रहा हूँ? तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ. आई एम चेजिंग द हार्ट ऑफ अ फिल्म. आई एम नॉट चेजिंग द साइज ऑफ अ फिल्म, because to me the heart of the film is the size of the film. The size of the film is just a platform for a film, and of course it's nice to see it on the big screen. So I don't come from that kind of thinking that बहुत सारा पैसा खर्च करो तो बहुत सारी ऑडियंस आएगी. I think हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, हुआ वेरी स्मार्ट, कि यार अगर कम में अच्छा काम होता है तो मैं ज़्यादा क्यों दूँ,
तो मैं तो बचपन से ऐसे ही बड़ा हुआ हूँ, मेरी यही थिंकिंग है। और मैं तो हमेशा डरता हूँ एक्चुअली बहुत हाई बजट फिल्में करने से, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हर चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आई थिंक लोग फिल्म बनाते हैं। तो मेरी रिलेशनशिप इन 4 लोगों के साथ है, जो 3 लोग इंक्लूडिंग मी 4 जो अभी स्टेज पर बैठे हुए हैं, और अगर हम साथ में मिलके एक फिल्म की कहानी को समझ के, उसकी इमोशनैलिटी को समझ के, और हम किसके लिए फिल्म बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, समझ के एक बहुत ही टाइट वे में काम करें, तो शायद उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत पोटेंट होता है। ऐसी मेरी थिंकिंग है। हैविंग सेड दैट, मैं हमेशा देखा है छुट्टी के टाइम जो भी 2-3 पिक्चरें आती हैं और यही 4 सवाल होते हैं, वो आएंगे तो आपका क्या होगा और आप आएंगे तो उनका क्या होगा। लेकिन सब फिल्में छुट्टी पे जो नॉर्मल उनका कलेक्शन होता है उससे बेहतर करती हैं, क्योंकि छुट्टी पे देखिए क्या होता है, एक ऑडियंस है जो हमारी फिल्म देखना चाहती है, एक ऑडियंस है जो भी दूसरी फिल्म आ रही है वो फिल्म देखना चाहती है, लेकिन एक ऑडियंस है जो फिल्म देखना चाहती है। वो छुट्टी के लिए वेट करते हैं कि चलो यार फिल्म देखते हैं। सो वाई शुड यू नॉट बी द फिल्म दैट is in the theaters when everybody wants to go watch a movie, so you should not give yourself so much importance also कि सिर्फ मेरी वजह से लोग आएंगे। बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग आते हैं, so that's how I look at it. I think फिल्म का दिल बड़ा होना चाहिए। मैं हमेशा उन्हीं फिल्मों को चेज करूंगा जिनका दिल बड़ा है। Hello, sir. Before we continue, we'll be taking just 3 more questions. Last 3 questions. Hello, sir. Hello, sir. Yeah. Hello, sir. First of all, Yes, you've noticed very, very correctly. My heart is very close to Arjun Talwar's character. I can relate to him tremendously. Like I said, when you're in your 30s as a man, the responsibilities that you have, that transition from being a boy to a man, only happens after you become a family man. Till then, you're a boy. When you have those responsibilities, when you have a family, when you have children, when you put other people in front of you, then when you chase your dream and you don't let them down, that is being a man. बाकी सब वो टाइम पास है, चलता है, हे कूल यो ब्रो, ये सब ठीक है, वो 20s में मैंने भी किया है. But I respect the men who know how to balance everything, and Arjun Talwar is a guy who has to look at his family. And it's a very emotional journey of a character. And I don't know, like I connected with it very closely. So there is a lot of Shahid in Arjun Talwar. Yes, there is. Okay. Sir, at your center, sir, your dad is one of the most finest actors. And what is his verdict on your performance in Jersey? You ask him. Now, what has been the feedback he has given you? My dad is a man of very few words, and I don't know, actually. We haven't been able to chat because I've just been promoting. It's been so busy, and usually we do our screenings, closer to the release of the film. So when we see it together, I will be standing nervously like a student, and hopefully he'll say a few nice words. But as of now, I don't know what he thinks about me. I hope it's good. Shahid, Lipika here. आपके पास माइक आ गया. What's your take on remakes? And I have done two. Yeah, but I had spoken to Nani. He says that Shahid is a brilliant actor, and he'll definitely do a good job. So, and also I asked him why. I agree with him. Yeah, even we know you're a good actor. I'm just kidding. Yeah, I know that. Okay, so. So you know everything. Then what should I say? Been here, no? So I know about you. So Nani was also of the opinion that I asked him, उसकी अभी ये शाम संगा रॉय रिलीज हुई थी ना, तो I asked him कि why didn't you make it in Hindi also? So he said, I love my pictures to be remade. But that's very magnanimous of Nani to say that. I mean, it goes to show that he's a pure artist, and he's not selfish about the content that he creates. And it's great for him to, wish well on Josie. I know you can be. I'm sure we all are a little, क्या कहते हैं? We are all little अपने काम के बारे में थोड़ा सा हम लोग को ऐसा होता है ना. You get a little possessive about it. But there are only that many stories, yeah. So many films that are called remakes because they're official remakes. But I mean, so many films are like so many other films, and so you have to make it your own. And you shouldn't do a remake just because it was a hit. I think that would be just not a very inspired artistic thing to do. That would be a very calculative thing to do. I've always said that I did this film because it just hit me straight in my heart, and I felt like ye kahani to I want to tell to the wider audience because it motivated me tremendously.
You know, so this film is a very personal kind of thing for me, very personal. You had serious talks, so let me ask you your desire to work with Samantha. On a lighter note. My desire to work with Samantha. What about it? You want to work with her? You want to work with her? Shahid wants to work with I want to work with a lot of heroines. Yes, of course. I had read somewhere, so I asked you. Oh, like that. Yeah. Yes, that was because it was related to Raj and DK and Family Man, and yes, of course. I mean, she's tremendous. Okay, my question to Gautam, for RR, you know, the Telangana Hyderabad. I want to work with Allu Arjun also, but Achha, very good. I want to do that step with him. That Ooh. and yeah, I want to do. Okay, you'll do. You like that? Good. When Obviously, I grow beard anything, and do like this. Anything you do suits you. Audiences like you so much. Thank you, thank you. Okay, Gautam, RR, I mean, in the south, you know, they've increased the rates of the ticket for RR for 10 days, I suppose. Telangana and Hyderabad. Yeah, and I think also, so, ma'am. what about your jersey? Will you be enjoying the same status? Same status. The ticket pricing. Ticket prices. I'm really not So sure. I'll answer that I'm instead very of wrong person Gautam. Ticket pricing is normally decided by the cinema themselves. It's not by the film because we bring the film to the cinema. Each cinema, depending on a holiday, depending on the film, they decide their ticket pricing respectively. Like City Mall is different than Icon. Juhu is different than Cinepolis. So everybody's different. They price it accordingly. So that's something that normally is a cinema decision. So it comes down like if there's a holiday weekend, they like to take a little spike. If it's a normal weekend, they keep it normal. So those are decisions they take. So it's nothing to do with the team over here. There was some problem, you know, hiccups in the south about the tickets. No, that was a cinema decision. Yeah, he's a director, so he wouldn't know the commercial aspect of it. So he sticks to the creative. And normally it's the cinema owners saying big film or holiday film, we want to increase the pricing because we know audience is coming and get that footfall. Thank you so much. Hi. So my question. Hi, Shatma this side from Home Bollywood. My question is from Mrunal. So जैसे कि शाहिद ने बोला कि मृणाल तो ऑलरेडी टीवी की बहुत बड़ी स्टार है. वेल कितनी बार ऐसा हुआ है कि शाहिद आपकी तारीफ करते गए हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान. एंड शाहिद आपसे एक सवाल ये है कि एक सीन है फिल्म के अंदर जहाँ पे यू आर हगिंग योर डैड. बहुत ही इमोशनल सीन ऐसे हमें देखने के लिए मिल रहा है. बट व्हाट वाज योर थॉट वाइल शूटिंग दैट पर्टिकुलर सीन? इमोशनली क्या चल रहा था आपके दिमाग में जब आप वो सीन शूट कर रहे थे तब? Before I answer, can I just, Shahid, can I hug you? Thank you for asking me that question. The first week of Jersey was very difficult क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ ना कुछ होता था. मुझे याद है अमन के साथ मैं बैठी थी अपने रूम में और मैं रो रही थी. मुझसे नहीं होगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट है. और सेट पर जब मैं जाती थी, जब हम अपने रिहर्सल्स करते थे, यहाँ पर अनिल सर नहीं है जो हमारे डीओपी है. मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगी क्योंकि अनिल सर, शाहिद, अमन एंड गौतम सर, ये चारों, they all are like my pillars. And coming from them, when they say, Mrunal, you can do it, it just makes you feel good कि हाँ यार मैं कर सकूँगी. एंड जो भी आप देखोगे 14 अप्रैल को वो बोलेगा. But having said that, I'm really blessed to be working with Shahid. It was my dream. It's a dream come true. And I'm sure you all the girls are jealous out there. But मैं बहुत उनकी बड़ी fan रह चुकी हूँ. I've told him multiple times and I will never ever get tired of how wonderful, how focused and how secure actor he is. His performance is just, this performance, it blew my mind. And I'm the lucky one to be witnessing this behind the screens as well. And बहुत वक्त लगता है केमिस्ट्री बिल्डअप होने के लिए, लेकिन कभी भी शायद ने मुझे ये फील नहीं होने दिया दैट I've just started my career. He always treated me like a family and I'm really happy to have him as a friend as well. A guy actually left me because I was doing a film with Shahid. He's like मैं कर लेता हूँ. अंकल मुझे लगा आप सो गए थे. मालूम है आप कैमरा रख के जो मस्त एकदम ऐसे थे आप, मैं 3-4 बार देखा कि अंकल सो गए क्या.
आप 8 बजे निकले सुबह में? सर मैं 7 बजे उठता हूँ सर, 6 बजे, कभी 5 बजे. Let me just finish answering her question. After. Well, it's always. This is the first time when I worked with my dad, I felt like both of us are men, both of us are professionals, and both of us are allowing each other to not bring the father son angle on set so much. I think we used to find small moments where me and him would go on the side and spend father son time. Sometimes it would be at lunchtime, sometimes it would be when we were back in the hotel. But most of the times on set, I needed to be Arjun and he needed to be Coach Bali, and he let me do that, and I had the confidence and I think the experience to want to do that because we are there as professionals. Yes, sir. Well, we would Yes. love to take more questions, but we're short on time, so that'll be the last question we'll be Let taking. this for person today. take his last question. Just let him take the last question. Yeah. Shahid, I don't think you remember. तू jealous हो रहा है क्या? सिंगापुर से आए हैं, इनसे क्यों सवाल पूछ रहे हो? Actually, I was lucky enough to be in the event where you were launched the Wax Museum in Singapore. And Yes. before that, I remember telling my girlfriend that Kabir Singh is going to be a blockbuster. And I was so happy that that movie turned out to be a huge blockbuster. And today I told her the same thing, that Jersey is going to be a huge blockbuster again. Sure. And हम तुझे यहीं रख लेते हैं यार, तू सिंगापुर मत He's जा. our lucky and charm. and a few questions from the Singapore fans for you. Since they love you so much, they want to see you come Singapore one day. Because of COVID, it was so hard for. They are dying to see you in Singapore, and many of the fans there don't even understand the language like me, and we still love to see you on screen, and they would love to see you in Singapore again. Thank you so much, brother. Thank you for all your love. Yes. Thank you for being so supportive. Singapore is a beautiful place. I love coming there very often. And the minute things open up and travel becomes more relaxed, I will make sure that I come there. But thank you for all your support and thank you for all your positivity. Thank you, brother. And one more thing, last one. They told me to tell this. So we did a poll of the most loved actors from Bollywood, and Singapore voted you and Shah Rukh Khan. So they are dying for you. They call you the King Kapoor to be with King Khan on screen one day. Wow, thank you so much. It would be my privilege, but thank you so much. Thank you. Thank you. Well, thank you so much for everyone who joined us today. Thank you so much, Shahid, Mrunal, Aman sir, Gautam, Thank for you. joining us. तुम लोग ना, जब मैं स्कूल में 4th स्टैंडर्ड में था ना, तो मेरे को 9th स्टैंडर्ड के बच्चे बहुत बुली करते थे. तुम लोग एकदम वही हो, मालूम है क्या? ऐसे क्या है यार, बेचारे को भी नाइस टू हिम यार. चेयर हटाओ बेटा, चेयर हटाओ. और कुछ डिमांड है सर आपकी? तो क्या चाहिए मेरे को इतने सारे? क्या, व्हाट इज द पॉइंट?